अब देखिए, जब काव्य से पूछा गया ना, उसके आगे उसने क्या बताया, अब यहाँ पर देखते हैं। जब शिखा ने काव्य से पूछा कि तुम क्या करती हो, एंड यू, और तुम, उसने कहा MA मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो काव्य क्या कर रही थी उस टाइम पे, मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसलिए उसने कहा MA। अब ये किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, ठीक है। MA इकोनॉमिक्स या फिर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो किसी में भी MA कर रहे थे कुल मिला के बस। तो इसने क्या कहा कि मैं MA में हूँ, MA कर रही हूँ, सो MA, बस बात खत्म। अब शिखा ये फिर से बोल रही, समीर तुम क्या कर रहे हो। उसने काव्य से पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो उसने कहा मैं MA में हूँ, MA। और समीर से पूछा, समीर तुम क्या कर रहे हो। दरअसल जब समीर से शिखा ने पूछा, इसने जब समीर से पूछा तो उस टाइम पे वो चिप्स खा रहा था निकाल के, ठीक है। तो शिखा ने इसे पूछा समीर से, समीर तुम क्या कर रहे हो इससे। तो इंग्लिश में कैसे बोलना है फिर, समीर व्हाट आर यू डूइंग। काव्य ने तो बता दिया अपना कि मैं MA कर रही हूँ, और अब समीर की बारी है, समीर तुम भी बताओ तुम क्या करते हो। तो शिखा ने समीर से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, और मैंने आपको बता दिया ना, शमीर जो था, समीर, वो चिप्स खा रहा था निकाल निकाल के। तो इसने जब कहा कि समीर तुम क्या कर रहे हो, समीर व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो समीर ने कहा मैं चिप्स खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग चिप्स, मैं चिप्स खा रहा हूँ। एक्चुअली उसके पूछने का मतलब कुछ और था, वो ये पूछना चाहते थे कि तुम किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि बात तो पढ़ाई की चल रही है ना, कौन किस क्लास में पढ़ता है, कौन कौन सा कोर्स कर रहा है। और उसी बीच में उसने ये कहा, और इसका ध्यान कहीं और था, ये चिप्स खाने में लगा था अपना, तो मैं चिप्स खा रहा हूँ, इसने कहा। अब इसी को इंग्लिश में बोलना हो तो आई एम ईटिंग चिप्स, मैं चिप्स खा रहा हूँ। शिखा ने इससे पूछा तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो इससे मतलब तुम कौन सी डिग्री, मतलब तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो, तुम किस चीज़ की पढ़ाई करते हो। और इसका ध्यान कहीं और था, ये चिप्स खाने में लगा था, तो मैं चिप्स खा रहा हूँ। शिखा, अरे समीर मैं तुम्हारे कोर्स के बारे में पूछ रही हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है तुम चिप्स खा रहे हो क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे कोर्स के बारे में पूछ रही हूँ। सो शिखा ने कहा अरे समीर मैं तुम्हारे कोर्स के बारे में पूछ रहा हूँ। और इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना हो, मान लीजिए 2-3 ऐसे 4-5 लोग खड़े हैं सब साथ में, 2-3 लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक का ध्यान कहीं और है, वो कुछ और करने में लगा है, मोबाइल चला रहा हो सकता है, या फिर कुछ और कर रहा हो, तो किसी चीज़ के बारे में बात चल रही हो, उस टाइम पे अगर उससे पूछा जाए तो इधर उधर जवाब दे ही देगा, क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और है पहले से। अब ऐसे ये चिप्स खाने में लगा था, इसको क्या पता सही से, ठीक। तो इससे यही पूछा गया तुम क्या कर रहे हो, तो इसने सीधा सीधा बोल दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चिप्स खा रहा हूँ। ये तो शिखा बोली अरे समीर मैं तुम्हारे कोर्स के बारे में पूछ रही हूँ। अब इस तरह से अगर आपको पूछना हो सीधा सीधा, तो उसके लिए ओ समीर, अरे समीर आई एम आस्किंग अबाउट योर कोर्स, मैं तुम्हारे कोर्स के बारे में पूछ रही हूँ, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ तुम चिप्स खा रहे हो क्या कर रहे हो। तो ये वाला हो गया, ठीक। समीर सॉरी, इसको यहाँ पर कर देते हैं, सॉरी मैं समझ नहीं पाया, इसको दरअसल समझ में नहीं आया कि ये इससे पूछा क्या जा रहा है, इसलिए उसने चिप्स बोल दिया। तो सॉरी मैं समझ नहीं पाया, मैं कानून की पढ़ाई करता हूँ, ये कानून पढ़ता है, ठीक। तो इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो तुमने पूछा था मुझे समझ में नहीं आया था समझ सही से, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था, मैं चिप्स खाने में लगा था उस टाइम पे। तो इसने क्या कहा, सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया। आई एम आ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं लॉ की पढ़ाई करता हूँ, मैं कानून की पढ़ाई करता हूँ, वकील बनना है इनको, ठीक। तो मैं लॉ की पढ़ाई करता हूँ, मैं कानून की पढ़ाई करता हूँ। काव्या बोलिए, चलो अब अपनी कक्षाओं की तरफ चलते हैं। यहाँ पे काव्या बोल रही है, आप लोगों का फ्रेंड सर्कल होगा, आप लोग यार दोस्त होंगे ना साथ में, तो सब लोग बातचीत करते हैं क्लास में जाने से पहले। तो मान लीजिए टाइम होगा, अब टाइम हो गया, चलो चलते हैं अब क्लास की तरफ। सो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर क्लासेस नाउ, चलो अब अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, ठीक। तो वही काव्या ने बोला, चलो अब अपनी क्लासेस की तरफ चलते हैं, अपनी कक्षाओं की तरफ चलते हैं। सो इंग्लिश में बोलना होगा तो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर क्लासेस नाउ, चलो अब हम अपनी कक्षाओं की तरफ चलते हैं, चलिए अब हम अपनी कक्षाओं की तरफ चलते हैं। और फिर समीर ने कहा ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे, मतलब क्लास में जा रहे हैं, क्लास से निकलेंगे तो सीधा घर जाएंगे, उसके बाद अब कल सुबह फिर मिलेंगे सबसे। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे, ओके फ्रेंड्स, सी यू टुमारो, ठीक है। तो इस तरह से ओके फ्रेंड्स सी यू टुमारो, ठीक है दोस्तों अब कल मिलेंगे। वैसे
ठीक है तो दोस्तों, अब हम लोग भी कल मिलेंगे क्योंकि ये वीडियो भी खत्म हो चुकी है, वास्तव में खत्म हो गई है, क्योंकि जितना कुछ बताना था मैंने सब बता दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये रही वो सेंटेंसेस जिनका प्रयोग करके आप किसी से भी इंग्लिश में कन्वर्स कर सकते हैं, किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और विद आई मीन जितनी चीज़ें हो सकती थी पॉसिबल, मैंने आपको ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, ऑलमोस्ट सब चीज़ें बता दी यहाँ पे। ठीक, तो इनको आप लोग पढ़िए, याद करिए और उसके बाद बोलना शुरू करिए। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू almost whatever was possible from my side. And now if you have got any kind of problem in it, at that time you can tell me in the comment box below. Otherwise, you have some other options. You have many things to search. You can search the meaning of different words and sentences. If you want to use all these things and that to in some other kind of sentence, some other kind of conditions, or if you want to find out some other sentences, some other words, especially for having new kind of conversation, at that time you are completely free for doing so. You are completely free for doing this kind of thing. You can search for some new words and sentences from some other kind of books. That may be easier for you, I think. Otherwise, I've told you almost each and everything that I thought that were really very relevant and that were really very important from my viewpoint. And now if you think that there could be some other kind of sentences, so you can learn those things, especially according to your need or according to your capacity, because all the people have got different kind of capacity. And I think if I'm going to tell you lots of sentences from here, even at that time you won't be able to learn those things, because quantity does not matter, because the thing that matters is this, that how much you can learn, how much you can improve yourself. The words, as for giving lots of words, I can give you many words, but all those things are not going to work. Those things are not going to work until and unless you start cramming them, you start learning them. That's why it is very important for you to be focused towards your studies. And if you want to learn some more words and sentences, so I will tell you about those things in some other video. But I'm sure that you have watched each and everything that I have told you here, and all the sentences and phrases that I've told you here will be really very helpful for you, especially while having conversation in your college, school, university, or if you have some other friends of yours, you can start using all these things from now on. And today, this is the second or third video I think that I've uploaded here, and these things are helpful for all those students who are thinking of learning English, who want to speak in English, and that too in such kind of environment where there is no one for speaking English. And if you are going to learn all these things, I can assure you for this thing that there won't be any kind of trouble or problem, especially for you in learning these things and speaking. But for that, it is very important, not very important, but very important for you to cram these things, to learn these things at any rate. And if you're going to start making pretensions, or if you're going to make excuses by saying this thing that I cannot learn these things, or I cannot do this kind of work, I mean I can't do this kind of work because it is very tough, it is very hard for me, it is very hard for me, or it is very tough for me, at that time there is no possibility that you will be able to learn and speak it. Because even in previous days there were some people who came to meet me. They came to meet me and they started saying this thing that when we want to learn English, so what should we do about that? How can we learn it? And when I told them about this thing, that practice, I mean start buying books, learning sentences and words, at that time they said that it is very tough for us. I mean, first of all, we cannot learn lots of sentences and words, and we do not have that much time for learning new rules and regulations, and after that we can't learn new words and sentences, we don't have that much time. And on the top of that, if it comes to practice these things, at that time it is very far away from us. In all, I can say this thing that they wanted to say this thing that we are not ready for working hard. They were not ready for working hard, but they wanted to learn it just like this. So it is not that much easy, to be honest. If you have to be fluent in English, so for that it is important for you to first of all learn lots of vocabulary, those words that are used in our day-to-day life. And after that, otherwise we are professionals, or we are in some kind of sector like private sector or maybe government sector, or wherever we are, if we have to use some particular sentences there, I mean if we are in a particular area or shop or maybe some kind of
thing field in which there are some words that are prescribed there, that are given there, so we can use those words and sentences, especially there we can learn lots of sentences and words related to that field, and at that time those words will be really very helpful for us in understanding the people who will be working around us. And if we don't have that much time for learning all these things at that time, there may be a lot of problems. And there was one more person who said this thing to me, that I want to learn English. I want to learn is I want to speak English. So what kind of words I should try to learn? So I think from my viewpoint that if somebody is thinking of learning English, especially for some kind of work, maybe company or some other kind of, it depends on the field, in which field you want to go. If somebody has to become an advocate, so he should try to learn the words that are related to that field. If somebody wants to become an advocate or lawyer, at that time he should try to learn the words that are related to that field, because there are some particular words that are used there. And if somebody wants to become a doctor, at that time he should try to learn the words that are used in that profession, right? And in the same way, if somebody is thinking about joining some kind of company, so he should try to learn the words that are used related to that company, or that are used there, that can be used in that environment. Okay, so these are some situations in which all these words and things are used. So I'll say this thing that because since it is not possible for anyone to learn all the things, all the words, and people don't have that much time for learning so thick dictionaries, they don't have that much time for going through this much thick dictionaries. And if they are going to do that, so it will take a long time and they cannot learn all the words and sentences, right? So it will be better if you're going to learn all those words that are used in your field. At that time it will be really very helpful for you, and I'm sure you will be able to improve and learn your English very fast. And it will be really very relevant, especially for your purpose of learning English. And if you're going to start learning the words just like this, at that time there may be some troubles for you, because the words are related to some other field and you are preparing for some other field. So it may take a long time, and if you're going to start learning those words that are used in your own profession or field, at that time it will be really very helpful for you. All right, so I hope you have got all the things, and whatever I've told you here, especially from the beginning till the end, I'm sure you've been watching all the videos one by one. And after that, if you want to become a fluent speaker, so just watching the videos is not enough. You have to keep on practicing. Just try to use all these things with somebody. Find a friend, and after that try to use all these words and phrases with them, and only at that time you'll be able to speak fluently. And for becoming a fluent speaker, first of all you have to learn all these things, and after that practice is important. So you have to keep on practicing with anyone, with whomsoever you get, you have to just practice. All right, and I'm sure you will be able to fulfill